Yes, we are discussing about the works which produced during Puritan age. Okay. So you can add on in it. John Milton, the very famous writer First, of tell me the Puritan. genre. First, tell me the genres of Puritanism. What kind of works was being written in that era? Mostly, I cannot categorize the genre, but it was mostly related to Puritanism, like related to God, It was mostly related to religion, religion. Yes. है ना? Mm. And it was also related to medical practices. Like It religious was medicine, also related to theology, theology. Okay. है Okay. ना? Theology, medical practices, and religious है poems ना? and It was works. also related to hymns, some sort of lyric, है ना? Okay. Celebrating gods and goddesses. Okay. Okay. Okay, and rest, Yes. you can say that some sort of fiction, kind of fiction, was also being written in that era. For Hmm. example, you must have know about famous author like Thomas Brown, who has written Religious medicine. हाँ. Religio है ना? हाँ. Of the Doctor. Religion of the So doctor. in this famous work, he simply talks about the collaboration of science and religion. And one more I have studied with work by Isaac Walton. It Complete, was complete uh, angular uh, uh, art of fishing. uh, some what you have said, sir? Com- Which work? complete angular. Can complete angular. I studied. It was based on fishing. Yes, If that's I'm what not I'm wrong. saying. Yes. Art And I of was so and I was so astonished by it. Like, okay, this kind of work has been produced at that age. by the Like a way, what complete book on. by the way, Hmm? what about Anatomy of Melancholy by Robert Burton? It was published in which year? 1621, and I studied about it. It was like Robert Burton was suffering from hypochondria, What is and hypochondria? hypochondria is assuming something, matlab, thinking something in a wrong way when actually everything is okay. Oh, Pessimistic thought. so maybe you are talking about schizophrenia or OCD, obsessive No, compulsive disorder. this is what I have. No, no, Wait, do not look I for. I am just cross checking myself. No, no, whatever you are saying is quite right, but I am saying that you can Okay, also call it okay, schizophrenia. OCD, Okay. schizophrenia, है ना? हाँ. Because in these kind of mentally problems, people Hmm. try to frame out some sort of stories, even though Hmm. is not any problem. Yes, yes, yes. है ना? And yes, so he wrote that book, and it was about writers, their life. It was more about quotation, and it was just a book. And surprisingly, it went like it was very famous. It became very famous. Very good. And what about Leviathan by Thomas Hobbes? Leviathan. It is written in Yes. 1651. That I know, but I have not studied anything about it, like about the work. Come on, people, tell me something about Leviathan. Mhm. बताइए, बोलिए नेहा जी. इंटरनेट. Sir, I didn't study about the works. हाँ, तो बताइए. थॉमस हाँ. लेवियाथन. Sir, it Sir, rejoin, please. Please, you are not audible. You are not audible. Rejoin. Please rejoin. You are not audible. सर को एक सीन गिफ्ट कर देते हैं अपन. नहीं, मैं स्वयं भी दुखी हूँ. उनकी आवाज ही नहीं आती कभी. अरे आप लोग बोलो, साक्षी ने तब तक पढ़ लिया कैमरा बंद करके. ये पढ़ाई बाद में कर लिया करो. ये समय मैंने बोलने के लिए दिया, जिससे जहाँ से आप बोलो.
Come what is Leviathan? Turn on your microphone. सॉरी मैं बोल रही थी पढ़ाई मतलब लेवियाथन एज आई कैन रिमेम्बर इज द नेम गिवन टू अ एनिमल एंशिएंट एनिमल दैट्स ऑल So it talks आई हैव नॉट स्टडीड this work talks about what? I have not studied about it, sir. I It's skipped it. it is philosophical as well as mythological work. Na? Na? It was also rooted in religion. So most of the works which were also written in the same field, actually they were written just for the sake of didactic approach. They wanted to teach people just by writing books. है ना? For example, John Bunyan, ना, he was writing Pilgrim's Progress. John, yes, Holy Holy Cross. The Cross. it was the first book of John Bunyan, Holy Cross. है क्या? हाँ, मैंने नहीं सुनी है. Holy War and बोल रहा है. Holy War is was written by Jeremy Taylor. He was also writing over religion. Yes, I think you are right. Jeremy Taylor, Holy War. But he also written Holy War. John Bunyan. John Bunyan. Yes. Can I cross check, or should I cross check after class? कर लो. चलो चलो. मैंने पढ़ा है. मैं खुश होंगी गलत होने में. नहीं नहीं चेक करो. गूगल पे चेक करो. कॉपी में क्या चेक करो. Hmm. नहीं लगेगा. हर चीज कॉपी में मत ढूंढा करो. इतना समय नहीं होता. एक एक चीज पढ़ लो. आपको somebody else please check in Google. Holy War by John Bunyan. क्या कहती हो पुत्री? सही है. जेरेमी टेलर ने लिखा है He also wrote about religion actually. I know him. होली लिविंग. ठीक है. ऐसे मजाक में नहीं ना. जीवन निकल गया मेरे लिटरेचर में. हम्म. चलो. हाँ. तो और फेमस ऑथर. I just figured out famous author. आप वर्क्स बता दो तो हमें ऑथर याद आ जाए. No. Because you people must have read something. हम्म. Come on. John Bunyan, John Milton. We're not talking about Milton. Anyone else? कोई और? किसी ने कुछ कोई ऑथर? Sorry. I think John Dryden was also there at that time. John Dryden So, कहाँ से am I आता है? right? जॉन ड्राइडर तो Restoration. रेस्टोरेशन से स्टार्ट होते हैं ना. हम्म. हाँ, but लिखना 1650 स्टार्ट के. कर देता है. हाँ वो तो John Dryden पैदा कब हुए थे? पैदा तो पहले ही हो गए थे ना. वो तो Birth year. Birth year क्या है? एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि वो प्यूरिटन एज में से के बाद मतलब इसमें इंटरगेनल पीरियड में तो हो गए थे, आ गए थे. Tell me any other genre in this period? Religious, political, any other? Political, philosophy, religion. बताइए. Thomas Baker was also there, sir. अरे क्या कर रहे हो? थॉमस बेकर को कहाँ से पता है? थॉमस बेकर बेंजामिन जॉनसन में था. बेंजामिन जॉनसन जैकोबिन में था. कहाँ से आएगा डेकर? याद करो.
जॉन ड्राइडन का भी बर्थ ईयर 1631 आ रहा है। ये तो कोई स्कोप ही नहीं है, 20 साल में थोड़ी कोई वर्क लिख दिया होगा। 50 नहीं, 55 से शायद शुरुआत करी है, 50-51 से नॉट कंसीडरिंग। Any other famous work? By the way, why Mr. John Bunyan considered as the child of Puritanism? Because he might be writing in like earlier years of his life. Um, सर मैं बहुत दुखी हूँ, philosophy, भगवान कसम बहुत जान दुखी हूँ religious philosophy. सर मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूँ पर अभी मैं थोड़ा सा भगवान कसम खा रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ। अगर आपसे सिम नहीं ली ये डेटा जाती देता हूँ, इतना नहीं सिम बिल्कुल ली जा आवाज रही नहीं है, आ रही। मतलब इसकी जो इसकी वैलिडिटी हो जाए बस मैं लेने वाला हूँ। इसकी वैलिडिटी के चक्कर में अपनी वैलिडिटी निकल जाएगी। तो भगवान सर जॉन बनियन सर am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes. I'm saying that John Bunyan was also working on religious philosophy. His Pilgrim's Progress was also related to Puritan morality, and some sort of purity of heart, purity of life, purity of body, purity of mind. You can say some sort of related to divine life. So we can say that he was talking about the Why are you saying divine right? What because divine right does he have? I mean to say that in he was talking about the philosophy of life. In Pilgrim's Progress, he was talking about how we can get the most, or you can say how we can get the uh, how we can find the God, or you can say a divine What I type of was asking you a simple question: why Mr. John Bunyan is considered as the child of Puritanism? And telling me something which is not related direct to my question. Do not sorry sir, मैं तो बस ट्राई कर रहा था unnecessary. रिलेट करने का. No, you are Sorry not sir. relating anywhere. You two girls, come on. Do not. So what I have read about John Bunyan is that from very young age he was like he suffered with things, like he used to dream about uh, his last life, that sins that since he has did in his last life. And so from a very young age he was in the right path. He wanted people to show the right path and God's uh, providence. So for that reason, he even produced such kind of work like the epic. That is, and John Bunyan's Paradise. Not John Bunyan's. Paradise Lost. What was the Pilgrim, Paradise? Pilgrim. Pilgrim's Progress. Sorry, Pilgrim's Progress is considered as one of the three best allegories of the world. So he showed the right path to the most of the people. So here you testified my, or I should say, here you satisfied my question. You know? You are accepting that you are not answering anything right. Not completely right or not completely wrong. उसके But आस सर उसके आसपास तो वो I है ना. managed to, I added something that is better हाँ than जी, nothing. now यार it's मेरे your ख्याल से turn. हम लोग बेटर वेल्थ की तरफ जा रहे हैं. Neha ji, Sir, आसपास as मीडिया की तरफ. I told na कि in a very earlier time period of his
life, he started writing a good work. So that's why he known as the child of Puritanism. Puritanism. Yes. Now listen to me. Let me tell you something very nice. Maybe you people must not think of it. है ना? So listen. If we talk about John Bunyan, he was not very much educated. Okay? He was not enough educated to read literature from different languages, different culture. So what he had only Puritanism. But if we talk about Mr. John Milton, he was a genius. He was a polymath. He know he knows actually a lot of languages. है ना? Getting my point? And we can see a simple, a direct reference from Paradise Lost, in which he says, "What though the field lost, all is not lost." Mm. है ना? Stature. I didn't lost the zeal, or I should say, spirit to fight against God. By the way, this line was quoted in a famous work in Urdu language. It might be in Urdu or Farsi, है ना? And it is somehow associated to Babar. So here we can easily understand what kind of astounding genius was Mr. John Milton. है ना? So when Milton was reading a lot of text, a lot of books, on the other hand, another person that was Mr. This person, John Bunyan, he didn't have any referential books. He didn't have any kind of literature. Still, he was producing this kind of genius work. So whatever he got from Puritanism. On the basis of that only, he produced not just one work, but n number of works. And all are very nice actually. Yeah. It is said if he would have read a lot of books from different languages, he must have surpassed Mr. John Milton. That is why he is considered as the child of Puritanism. Whatever he was, all because of Puritanism. Getting my point? ठीक है, समझ में Yes, sir. Sorry, sorry. ठीक से समझ में नहीं आया। इसको थोड़ा में और थोड़ा सा डायरेक्ट समझाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जॉन मिल्टन एक महान विद्वान पुरुष रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफी साहित्यों को पढ़ा है अलग अलग भाषाओं से। मैंने एग्जाम्पल दिया बाबरनामा से, जिसको शायद मैं अंदाज है हुमायूं में लिखा है, किसने लिखा है, कुल मिला के बाबर से रिलेटेड है ना? उसी में ये लाइन लिखी हुई है। तो बाबर कहता है, क्या हुआ जो मैदान हारे, ना वो अदम साहस हारे, ना लड़ने की इच्छा शक्ति हारे। तो इससे पता चलता है कि जो जॉन मिल्टन था वो कितना पॉलीग्लॉट था, है ना, कितनी भाषाओं का ज्ञान था, कितने लिटरेचर पढ़े थे। वहीं यदि एक ऐसे व्यक्ति की बात की जाए जिसको जॉन बनियन के नाम से हम जानते हैं, उस व्यक्ति ने कोई कहीं शिक्षा नहीं ली थी। दूसरी बात, उस व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था किसी अन्य लिटरेचर के बारे में। उसने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, जो कुछ सुना, सब प्यूरिटनिज्म से सुना, और केवल उसी प्यूरिटनिज्म को बेस बना के उसने क्या खतरनाक खतरनाक वर्क्स लिखे। देखना, टोटल फिक्शन है, उसके दिमाग की क्रिएशन है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो, कैसे वो इतनी अच्छी कहानियां लिख सकता है? इमेजिन करके देखिए। इसलिए उसको चाइल्ड ऑफ प्यूरिटनिज्म कहा जाता है। सिंगल हैंडेडली काम नहीं चल सकता, इंटरेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, now tell me, if interregnum wasn't there in between restoration, है ना, and Carolinage, है ना, so what kind of literature was being written, or I should say would be written?
Just assume a case. If there were no this event of interregnum, yeah, assume. So what kind of literature must be there? बताइए. I am repeating my question. If there were no interregnum, what kind of literature must be written in that era? Religious. Religious? Are you sure? I am saying without interregnum. जवाब दीजिए. Interregnum affected how interregnum affect affected the literature, because what I know is from the time from the time Richard Oliver Cromwell Now your network is fluctuating, Sakshi. Unable to hear you. Now it's fine. Speak. huh, huh, like as Cromwell became the Lord Protector after beheading Charles I, there was extreme practice of Puritanism. Yeah, like he he banned theaters, entertainment, Christmas, Sundays, and everything. So, how it is going to affect the literature? Like, of course, the bent was on the religious side only, now. Eh? What? Like, what I understood from your question is, if there was not interregnum period, and interregnum period, what was the case of the literature? What was the genres, or what was the work that was produced at that time? So, interregnum uh, affected literature. I cannot justify this I thing. am just saying if there were no interregnum, what are the possibilities of literature? So can you define interregnum means like related to religion? Not interregnum Because is a I'm not period. Interregnum means Interregnum is a period where when there is no during executive, there where is no no. king. कोई राजा राज नहीं कर रहा होता, ऐसे अंतरिम काल बोल लो उसको एक तरह से. जब Interim government. Okay. अंतरिम गवर्नमेंट मान लो, राजा राज नहीं कर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र है ना. तो सीधी सी बात ये है, कंट्रोल तो पूरा वही कर रही थी ना उनकी सांसद. समझ आ रहा है? पार्लियामेंट जब वो राज कर रही है, उसमें पूरे प्यूरिटन लोग बैठे हुए हैं, तो जो जितनी भी काइंड ऑफ लव से, है ना, रिलेटेड पोइट्रीज हैं, सेंसुअस पोइट्रीज हैं, है ना, जितने भी लिटरेरी आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको सबको दबा दिया उन्होंने. क्यों? बिकॉज वो मानते थे ये सब क्राइम, पाप है, लग्जरी पाप है, ड्रामा, Pleasure is ये सब sin पाप for है, that. ये सारी चीजें पाप है ना. तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए. और इसी के चक्कर में इतना ज्यादा फोकस बढ़ा दिया गया कि लोगों पे ध्यान रखा जाने लगा कौन क्या कर रहा है. स्पेशली संडे के दिन उनको ट्रेस किया जाता था, ये सही से चर्च जा रहे हैं, हाँ, प्रेयर कर रहे चर्च हैं. जाने के समझ आए? अब अ, रेगनम नहीं होता तो लिटरेचर शायद मैं समझता हूँ अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता, ग्रोथ पकड़ता, है ना. पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, किंग का असैसिनेशन कर दिया, और जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन है? प्यूरिटनिज्म. कोई ऐसे व्यक्ति विशेष जो किसी भी प्रकार के भाव को, जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हो, लग्जरी से जुड़ा हुआ हो, उसको पाप मानती है ना. तो जब ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो लिटरेचर भी नहीं लिखने देंगे, ना ड्रामा परफॉर्म करने देंगे, ना ड्रामेटिस्ट अगर कुछ लिखेंगे भी तो उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते आप, है ना. ऊपर से हाँ, एक्ट आया था जो था ना, जो एरोपजेटिका, जो बॉर्डर भी licensing act of Licensing. है ना. तो 1643. लाइसेंसिंग जो एक्ट था वो पारित कर दिया, तो उसके बाद में तुम कुछ पब्लिश नहीं करवा सकते हो बिना उनकी निगाह के. करवा के बताओ, हम्म है ना. अगर ये लोग नहीं होते तो लिटरेचर काफी फलता फूलता. बहुत अंतर पड़ता. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बस ये है, ये केस था, मैंने आपको सोचने के लिए दिया. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता. एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स एक्चुअली. just because of that interregnum thing, na, we cannot think about it. Though it was known to me,
what was it, but I cannot think in that scenario. समझ आया जो मैंने बोला सही से, या ऐसे ही बच्चों की तरह सर हिला देते हो? नहीं सर, समझ में आ गया। गॉट इट। है ना? गॉट इट? Oh, now I'm asking you another question. You must be familiar with the case that Charles first was beheaded. Yeah. So, how is this possible that Charles II once again came to England and got a monarchy once again? What can be the reason? How did he escape May I? from the nation? How did he escape from the nation? बताइए. How did he escape from the nation? That I don't Yes, know. yes. Even even But I even know. even Puritans were simply looking for the wife and child of Charles I, because they were simply considering the half partner in the crime, uh, the lady of the king. You know? She was the supporter in crimes. हाँ, नहीं, Charles first, हाँ, even wife of Charles first was impeached in front of the parliament. This is what I have studied. She has also been impeached, and so yes, why Charles II got restored? The answer for that is the people of England got fed up with the tyrannical government of Oliver Cromwell. Like what they have expected from a different government to be they should be given liberty, but in spite of that he was trying to forbid he forbidden he has, what Forbidden, is the perfect, he forbidden. has forbidden them for many of the things, as we have discussed previously. They were not allowed to, like girls, women were not allowed to dress up in a certain manner. Theaters were closed, entertainment was not going on, and the licensing act, so it was like ruthless. It was like they were tyrannical. And after Oliver Cromwell's death, when Richard Cromwell sat on the throne, it was a shocker for everybody. Like, what is going on? It is same. The pattern is same like as in monarchical government, like Raja ka beta Raja. So there is no change. For that reason, they figured out कि इससे अच्छा तो हमारे राजा थे, and in that at the same time Charles II came and Yes, very good. You answered very nicely. But I was looking for, like, there was the impeachment for lady as well, the wife of the king. हाँ, So how yes, she he was impeached. escaped? Escaped. Escape, not escape, escape. I've not studied about it. He himself tried to make arrangement so that lady along with the child should leave the nation. And they simply went to Poland and afterwards simply settled down in France. And this is how the journey of Charles II is there. But in my point, whatever you answered was quite right. Very interesting and effective. Okay. Now tell me the major role of John Pym in the case of or in the impeachment of चार्ल्स फर्स्ट. जिसने नहीं पढ़ा है उसके सर के ऊपर से जाएगा, यही नहीं पता होगा जॉन पिम था कौन. Um, I don't have any idea about John Pym, sir. बताइए आप दो लोग. No, sir, I didn't heard the name of that person. He was simply, I should say, governing or managing the parliament, and he was the person who managed to uh, create some sort of condition under which uh, the impeachment was going. And before John Pym, George Eliot was a person who was stabbed by a person, or I should say,
he was executed over the order of king. Yeah. So John Pym became the main reason behind the beheading of the king, not Oliver Cromwell. Oliver Cromwell was simply against. He raised the army by the effort of him. King lost the war. है ना? King lost the civil war. By the way, what is civil war? Sir, I have also studied about Bolingbroke, friend of Charles First. Bolingbroke or Charles? Yes, अच्छा, Charles First. Bolingbroke. There was some character who was Villiers. executed. Charles Villiers. Earl of, yes, yes, Earl of Buckingham. Something from B. Something from B. Villiers. Buckingham. Villiers. Yes. Okay. And Okay. it is also said like he had some Yes. sort of homosexual relation with James First. Relationship with them, and when some people took action against him, so Charles got agitated and he took the action. Like he thought of storming the parliament and things No, like that. actually he was stabbed. I think so. Like there was a plan behind plan for him. Like they did something wrong to him. And for that reason, Charles got agitated. Irritated, and then he ordered to execute George Eliot. And all because of it, Puritans got Execute. He ordered to execute the people who were involved against him. So very nice. Any other historical event that we are somehow not recalling? बताइए. 1642 banning of theaters, we know. 1643 licensing act. These were the two major events that has happened during this age. आप दो लोग कुछ बोलोगे? 1658 death of Oliver Cromwell. 1658 है ना? By the way, who wrote over the death of Oliver Cromwell? Hmm. बताया था तब. आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो. Sir, it's a very famous name, but I cannot. Andrew Marvell Andrew Marvell, yes. and then Andrew John Marvell. Milton, है ना? And then John Milton and one another person is there. Dryden. Yes. Dryden is तो आओ तो चला when मतलब ठीक है, okay, we will discuss. है ना? Getting that? So these were the three major writers who were simply talking about him. है ना? By the way, could you people tell me about the history of ode in English literature? As we are talking about a Horatian ode on the arrival of Mr. What was his name? Lord Protector, Oliver Cromwell. So it was actually an ode. So I'm asking you, tell me about the history of ode in English literature. It's a very genuine question. You're supposed to have fair idea. In which year, for the first time, author used this genre? Come on. बताइए. कोई आइडिया है किसी को?
Hmm. So this बहुत सारी चीज Horatian अभी पढ़ा है. ode is named after the, as you said in previous classes, after the writer Horace. He was from But you are Roman, I think. but you are talking about ancient time. I'm talking about English literature. So I think this genre come after in this age, in Puritan age, because Then before that then what we haven't about seen. Abraham Cowley, who used irregular ode? Yes, irregular ode is associated with him, Abraham Cowley. Before Mm. Abraham Cowley, is there any other person who was practicing this kind of genre? Sorry, sir, unable to recall. Abraham Cowley. अमरुस्त तो बोलेंगे ना. हाँ. और सर पढ़ के बताएंगे कल. आज पढ़ लेंगे इसको. इसको पढ़ लोगे. वुड की हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न. मैम आप बताइए साक्षी मैम. Sir, all I can say is कि ode is written for um, specific purpose. Like I just read a distinction between elegy, so Okay, it is quite fine. As you uh, don't have any clear idea, so you do one thing, just try to read it, है ना? When you sure. start this class. Now tell me, what are the major types of ode? Sir, I think there are three kinds of ode. First one is Horatian, second one is Pindaric, and third one is irregular ode. Irregular. First tell me about the Horatian ode. Structure of Horatian ode. Strophe, antistrophe, and Very good. Epoch. Very good, Beta. Very good. You are doing very right. I'm asking about Horatian ode, not Pindaric ode. Do not behave like you are confused. Horatian ode is what today I learned is it's a very simple. Well, it I'm doesn't have any asking about the structure of Horatian ode. Tell me about this. Spencerian. It's more of Spencerian types. Sir, what I studied, there are short stanzas, and these are equal in length. Listen, there is no limitation actually, but according to me, what I read in previous year, so there must be stanzas of 2 line or 4 line. Getting my point? There must be stanzas of 2 line or 4 lines. Rest, we don't have any other information. It can be long, it can be short, it can be medium. We have no idea. Now tell me about Pindaric ode. Sir, its structure is divided in three parts like a strop, anti-strop, and epode. What So, is a strop? it's a strop is start like establish the theme of the ode, and then anti-strop balances the theme, and epode conclude the overall idea or philosophy idea or theme of the work. Are you asking in another way, right? No, I was simply asking the way it was written. Listen, stroke is rounding clockwise, anti-stroke is rounding anti-clockwise, epode is rounding in between the stitches. Yes, sir, I studied about it because that time the people were there which performed something on that. So it is related to their action of dance, like left or right something. I studied about it. By the way, what you were answering, could you answer once again? Sir, about Oh, stop and anti-stop you are yes, asking. yes, you were giving something else. Tell me. Yes, sir, I studied like stop
establish the theme of the ode in first stanza, we can say, and then in anti-stop, it balances the theme or talk more about that, and in epode, it conclude the theme or idea, whatever about they are talking. Okay, what is the structure of Pindarico? Structure as in ये structure ही था ना? No, no, it wasn't structure. It was elements. I told you Okay, that structure. there must be either two lines stanza or four lines stanza for original. So the same Okay. like with this person, with this ना Pindarico. इसका क्या structure Sir, I think we don't have any particular है? कुछ kind तो of है, limitation. मैंने पढ़ा है, कुछ है ना? मेरे को याद Okay. स्ट्रक्चर है उसका, बाकी इरेगुलर का कुछ नहीं है, वो पूरी तरह हम्म, सही है, उसमें ऑथर जैसे हाँ। लिखना चाहे वैसे लिख दी। सर एकदम ओट का ये सब ये जो चीज है ना, ये मतलब मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कैसे सेट मतलब ये सब आयम्बिक पेंटामीटर वो मैं ब्लैंक समझा वर्स, दूंगा, मैं तो समझ ये एक दिन अपन इसका रख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। वो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। समझ आया? पहले तो ये देखना कि ओड की हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, है ना? और वर्ल्ड में तो आपको पता ही है, सापो हुआ, पिंडार हुआ, होरेस हुआ, ये फेमस है ओड से लिखने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में भी का ही है ना? जैसे जॉन कीट्स ने लिखा है ना? और किसने लिखा है? और कोई फेमस ऑथर? वेस्ट पीबी विंग शैली। है फिल्म, हाँ पीबी पीबी शैली ने शैली, लिखा है। और टू वेस्ट विंग, हाँ, और हम्म, और टू स्काईलार्क। विलियम कायलाक। विलियम वर्ड। अच्छा ये बताओ, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। टू आ स्काईलार्क किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ। नहीं, पीबी शैली ने ही लिखा है ये स्काईलार्क। कंफ्यूजन। वर्ड्सवर्थ ने तो नहीं लिखा है, आई एम श्योर वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। एक रेडियो वर्ड्सवर्थ। हाँ, पहले आपस में जो है ना लड़ झगड़ लो, फैसला कर लो कौन सही है। वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है स्काईलार्क। चेहरा दिख रहा है क्या साक्षी का? साक्षी का चेहरा दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हाँ, है। अब साक्षी सही बोलेगी। वो सही बोल रही है, सी इज क्वाइट राइट, है ना? शेक्सपियर ने लिखा है। हाँ, हाँ, एक शेक्सपियर तो ने। सिक्स में तो वर्ड्सवर्थ, मतलब एक तो कोई डिस्टिंक्शन था कि कंफ्यूज नहीं होना है इसका। वर्ड्सवर्थ। दो टाइटल है, टू आ स्काईलार्क, टू दी स्काईलार्क। टू दी स्काईलार्क, तो टू टू दी आ लिखा है, टू टू दी आ लिखा है स्काईलार्क लिखा है पीबी शैली ने, टू पीवी शैली ने, लिखा उसको है विलियम वर्ड्सवर्थ वर्ड्स ने। आई वर्ड्स। गॉट हर पॉइंट, है ना? जो वो कहना दोनों सही है हम। हाँ, चाहती है। मैं इसीलिए तो बोल आ रहा था, द पे हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ऐसे ध्यान देना चाहिए टाइटल्स में हमेशा। हो सकता है सामने वाला पूछ ले, आप कॉन्शियस नहीं हो तो आपने गलत बता दिया। पूछता ही है। हाँ, सामने वाला पूछता ही है। जैसे डॉल्स हाउस किसने लिखा है बताओ? हेनरी गिब्सन। बहुत बढ़िया, कोई और बताना चाहेगा? टू अ डॉल्स हाउस बाय टू हेनरी डॉल्स हाउस किप्स। नहीं है, केवल अ डॉल्स हाउस है और डॉल्स हाउस है। मैं पूछ रहा था डॉल्स हाउस किसने लिखा है। उसको ओड मत बनाओ जबरदस्ती से, एक शॉर्ट स्टोरी, एक ड्रामा। ड्रामा को लिखा हेनरी, जीबी शॉ। नो, कैथरीन मेन्सफील्ड ने लिखा है डॉल्स हाउस शॉर्ट स्टोरी। ओके। यही होता है, वही तो बोल रहा हूँ कि एक नाम से कई, जैसे आर कैजुरीनाट्री किसने लिखा है? क्या क्या क्या? आर कैजुरीनाट्री किसने लिखा है? मुझे पता है, तोरू दत्त। तुरुदत्त। वेरी गुड। If I talk about the collection of short stories, then who originally wrote this work? हम्म, तो योर है Thomas, याद नहीं। Thomas Edison। सॉमसेट मॉगम। ओके, मॉगम बोल लो, हम्म, मॉम बोल लो, कुछ भी बोल लो। मॉगम ही बोलूंगी। है ना? इस तरह से कई बार टाइटल्स में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है ना? बात बाकी रॉबर्ट बालपोल का लड़का हॉरेस बालपोल, है ना? उसका क्लोज फ्रेंड कौन था? किसने लिखा है एलिजी रिटर्निंग कंट्री चर्चर? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने एक फेमस ओड लिखा है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द कैट। हाँ,
वो अपने फ्रेंड के लिए लिखा है शायद, इसी वही के लिए। रॉबर्ट हाँ वालपोल के हाँ। लड़के के लिए। हम्म। क्या नाम था उसका? हॉरेस वालपोल। और इस बॉल। हॉरेस वालपोल की जो कैट थी, वो जो फिश टैंक होता है उसमें गिर के मर जाती है, तो उसको रिमेम्बर करने के लिए उसने एलिजी लिखी। हम्म। हाँ, ऐसा बहुत सारे हैं। हॉरेस वॉल्पेल वही है ना जिसने फर्स्ट गॉथिक नॉवेल लिखा है, क्या नाम है? समथिंग। यस, बहुत फेमस है, याद है। नाम बताओ। ओट्रेंटो। यस। और फ्रेंड तो। ओके। पूरा टाइटल है ये याद है? आधा है, कुछ पूरा नाम है। द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। बिल्कुल यस, बिल्कुल। दिस इज द कंप्लीट नेम। है ना, वही बोल रहा था कि ऑटेंटो पूरा नहीं है। है ना? अच्छा एक बात बताओ, तो ये पहले आया था या मैरी शैली पहले आई थी? मेरी शेली पहले आई थी, अच्छा। और लिखा और फ्रैंकेस्टाइन उसमें बाद में था शायद, ऐसा मुझे लगता है। 1818 पे लिखा था फ्रैंकेस्टाइन। अब ये पता है कि ये जो कल्चर था ना, वोरक कल्चर वगैरह, उससे इन्फ्लुएंस्ड वर्क है ये गॉथिक सेक्शन का। हाँ। तो वो रोमांटिसिज्म तो से पहले आया था, वो रोमांटिसिज्म से पहले आया था इटली से। हाँ, इसको प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है ना, इस टाइप के वर्क कह को। सकते हो आप, हम्म। निश्चित रूप से कह सकते हो। So basically we were discussing about Puritanism. Now we shifted our topic. We suppose not to do so, you know, because when we will be free-handed, you know, then in that case we will be discussing from everywhere, not right now. Give me any other thing so that I can phrase question out of that. Can I Not can I. just If you are हम्म, both, not can I. okay? May I look at the things which I studied today so that we can get an idea? Okay. Look at your copy. Sir William Davent. William D. Abnett, not David. D. Davent. He is the bastard of Shakespeare, in the remembrance of Master Shakespeare. Gondibert. Thomas Yes, Dekker. Gondibert was not complete work actually. Hmm. Unfinished work or unfinished work. Unfinished. Okay. Thomas Dekker. Could you people tell me the use of suffix and prefix was introduced for the first time in which kind of language? Old, medium, early, modern. Come on. I'm in old English language. no, you are just assuming. It's not like that. Not used in English first time, na? It is used in another language. It was introduced I'm to English. asking. It was introduced to English language in which period? Old, middle, or modern? हम्म, मॉडर्न तो नहीं है आंसर मिडिल में ही है। उसके। हाँ, मिडिल में ही समवेयर। ज्यादातर लैंग्वेज का विकास हुआ है मिडिल में। हम्म, ठीक है, याद रखना इस बात को। हाँ, क्या बता रहे थे आप साक्षी? Just Sir Thomas Dekker and Thomas Fuller. These two were the other writers. And Thomas Fuller wrote History of Worthies of England. That was the first dictionary of history. hold on, The first boys. Let me give you basic idea. Do you know who is Thomas North? Thomas. North. He had written a famous work, or I should say, he had translation of Plutarch's life. है ना? And this work actually, Plutarch's life becomes the influence for Mr. William Shakespeare to write the biographies, or I should say, biographical dramas of Roman kings. I told you in previous class. शेक्सपियर का जो रोमन प्लेस लिखने का बेस बना था वो प्लूटार्क लाइफ, बताया था मैंने आपको। ये ओरिजिनली
लैटिन लैंग्वेज में। हाँ हाँ हाँ, Yes, we you have told us in discussed इसका about Elizabeth. it. ट्रांसलेशन इसी ने किया था, थॉमस नॉर्थ ने। ये भूलना मत, बहुत जरूरी चीज। Okay. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? Sir, we can discuss about John Milton now. No, we supposed not to do so, because Why so? we have to be limited. We will be summing up everything in every class. Right? Topic is totally limited. Listen to me. Do not go beyond. Because when But John Milton is the main writer of but this age, no? the reason is that you have gone through already John Milton, and all because of it you are saying like we should discuss it. Hey, like What these two persons? Just ask them whether they are ready or not. Ask them. John Milton, Neha, John Milton, like, do you have any kind of problem if we go through the John Milton? Because he is one of the major writer of this age. Then Like the then what age is known by Milton. It is also known as Miltonic age, age of Milton. mm, let's discuss about Milton. Come on. I have no problem. See, sorry to interrupt, but I think I need to leave the class because of I am having eye pen. मतलब आज ही लिखा है और बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ Oh मैं। my Okay, God. स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं है नेहा, यू कैन लीव, है ना? विल मूव फॉरवर्ड, take care, Neha. है ना? कल वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जो वहीं से इन द सेंस जो टॉपिक पढ़े हुए हैं ना, जो मैंने टॉपिक हुए हैं, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। कल restoration है। हाँ, रिस्टोरेशन होगा शायद, है ना? उसी हाँ। आगे बढ़ेंगे, आप देखते चलो आराम से, है ना? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलो। ये मत सोचना कि ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं छूटेगा, अंत तक पहुंचते पहुंचते सब हो जाएगा। क्योंकि मैं रैंडम हाँ मैं पूछता रहूंगा, कभी यहाँ से कभी वहां से कभी वहां से, जहाँ जरूरत पड़ेगी। मैं दोनों एजेस ही पढ़ लूंगी बिकॉज आज मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी तो प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन बोथ आई विल कवर टिल टुमारो। I can understand, but do not do this. Try your best to catch up everything. यस सर। करोगी तो बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक भी दिन बीच में होल्ड नहीं करूंगा। 11 तारीख तक इस हिस्ट्री को खत्म करना, यस यस आई विल बी ऑन टाइम। यस सर ओके। है ना? क्योंकि जैसे हिस्ट्री खत्म होगी उसके बाद में पहले थोड़ा लिंग्विस्टिक्स का देखेंगे, ठीक है? लिंग्विस्टिक्स के बाद में एक आधी क्लास में मीटर वगैरह वगैरह सारे कुछ हो जाएंगे, मीटर राइम वाइम जो भी है, ठीक है? उसके बाद में जब हम अगली क्लास में बढ़ेंगे तो सोच रहा हूँ कि हमें क्रिटिसिज्म पर चर्चा कर ली जाए, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है? क्रिटिसिज्म होने के बाद में कुछ मेरे पास अपने नोट्स रखे हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? जिसमें जैसे मेजर जॉनरास ऑफ ड्रामा, मेजर जॉनरास ऑफ पोएट्री, है ना? एंड वी सपोज टू हैव एग्जांपल ऑफ ईच वन, है ना? मेजर जॉनरास ऑफ प्रोज, है ना? एंड हु वर द मेजर हाँ। लिसनर्स। In that way, we supposed to have idea. Suppose, listen to me. I'm asking you questions. Actually, you're supposed to answer. है ना? Tell me what is your interest area in English literature? No, fiction novel. Fiction novel, है ना? So could you tell me about the genres of novel? Um, there are different genres like romantic, comedy. अभी तो They I are, cannot. they are the genres of drama, or they are the genres of novel. Like comedy of manners. Uh-huh. It is genre of novel, है ना? Comedy of manners, comedy of humors. Sorry, sir, I cannot recall it है right ना? now. So Though I all have studied something about that like is all. that is why I'm saying that I'll give you information related to this, so that you should Fine. be ready. Hmm. आप पूरी तरह से सजग रहो, तैयार रहो कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ, यही रीजन है। तो मैं पूरी तरह से आपको ऐसा पेरिफेरल पे तैयार कर दूंगा कि सामने वाला अगर क्वेश्चन Fine. तो आपके पास Perfect. उसका एक सबऑर्डिनेट जवाब होना चाहिए। हाँ. क्या Perfect. Sounds perfect. साउंड परफेक्ट नहीं, वो एक्चुअली परफेक्ट है।
Even हाँ, 70 rap. like at the end, it's all about how much hard work we will do on our subject. When we will know everything, then we will be able to answer everything. And your idea sounds perfect. And everything will be fine and nice with the time. Just work whatever I'm telling you. Yeah? Before interview, I think 10 to 12 days before, we must be summing up everything. Hopefully. है ना? And I think we will get only 15 to 20 days. मतलब डेट आने के बाद, बिकॉज इस बार कैलेंडर नहीं आ रहा है तो Doesn't matter. Do not think about it. I won't leave even a single topic. We'll read everything. Don't worry. और फिर आपको डेमो वी हैव सफिशिएंट टाइम. और फिर आपको डेमो भी देके बता दूंगा कि आपको आता कितना है. ये बता दूंगा क्योंकि पूरा इंटरव्यू डिजाइन करके मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ लूंगा. मेरे साथ यस सर, अलग इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. नहीं, उससे आपको ये पता चलेगा मैं कितना पानी में हूँ. हम कितने पानी में हैं, हाँ. समझ आए? अभी मैं यहाँ इंटरव्यू लेने बैठ जाऊँ, क्वेश्चन पूछूँ, तो देखो क्या होगा. अभी अगर मैं सपोज अभी साक्षी से पूछ रहा, तो साक्षी कह रही दे रहा मैंने जॉनरा, और जब जॉनरा पूछ रहा हूँ तो वो ड्रामा की बता रही है. ऑफ ह्यूमर्स ऐसा होता है. तो इस केस में मैं आप लोगों को पूरी तरह ट्रेंड कर दूंगा क्या करना है, क्या छूटा हुआ है, किस पर काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाए. ठीक है, वो ऑलरेडी मेरे पास पिछले ईयर का मैंने सब कुछ समअप करके रखा है, तो वो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर दूंगा, पर ग्रुप में नहीं डालूंगा. ठीक है, पर्सनली शेयर कर दूंगा.